One, please start, sir. We are live. Thank you. Good morning, everyone. Good morning. As the quorum is present, I proceed with the start of the EGM for the today. I, Pradeep Verma, Company Secretary and Compliance Officer of your company. I am attending this meeting from Panchkula. I welcome you all on behalf of your company, Ind-Swift Laboratories Limited, to its first extraordinary general meeting of 2026-27, which is being held today through video conferencing. Before we start the proceedings of the EGM, I would like to highlight certain points. This meeting is being held through video conferencing facility provided by CDSL in accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India from time to time and applicable provisions of the Companies Act 2013 and SEBI Listing Regulations 2015. The proceedings of this meeting are also being recorded for compliance purposes. Pursuant to the MCA circular dated 8th April 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this EGM. However, the body corporates are entitled to appoint authorized representative to attend the EGM through video conferencing and other audio means and participate and cast their votes through e-voting. I request the members to keep the mic on mute, please. The registered office of the company, which is situated in Chandigarh, shall be deemed as the venue for this EGM, and proceedings of the EGM shall be deemed to be made at the registered office only. The members were provided an opportunity to inspect all the documents referred to in the notice and the explanatory statement by writing to the company at its email ID investor@indswiftlabs.com the date of EGM. In accordance with the provisions of the Companies Act and SEBI listing regulations, members have been provided with the facility to exercise their right to vote by electronic means through remote e-voting facility and e-voting at the extraordinary general meeting of being held today. Remote e-voting facility was made available to all the members holding share as on the cutoff date, which was 29th of July 2026, during the period commencing from 9 a.m. on 2nd of August till 5 p.m. on 4th of August. Members joining the meeting through video conferencing facility who have not yet casted their votes by means of remote e-voting may vote through the e-voting facility provided at this EGM. The e-voting platform was opened 15 minutes before the commencement of this EGM and it shall remain open until after 15 minutes from the time of closure of this meeting. The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting are requested not to cast their vote again. The Board of Directors have appointed Shri Vishal Arora, Practicing Company Secretary, as the scrutinizer for this EGM. Based on the report of the scrutinizer, the combined results of remote e-voting and the e-voting at the EGM will be announced and displayed on the website of the company and will also be submitted to the stock exchanges within 2 working days from the conclusion of this EGM. We have received requests from 12 members for registration as speaker shareholder in the EGM today. The shareholders who have not registered as speakers are also invited to express their views and raise questions if they have any in the chat box provided. The board will be responding to such queries at the end of the meeting. With this, I now hand over the proceeding of the EGM to Shri Anna Munjalji, Chairman of your company. Thank you. Munjal sir. Yeah. Good morning, dear shareholders. I'm Navratan Munjal, Chairman of your company. I'm attending this meeting from head office of Panchkula. I welcome you all to the first extraordinary general meeting of 2026-27. Hope all of you are in a safe and good health. This meeting is being held through video conference in accordance with the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI. Participation of members through video conference is being reckoned for the purpose of quorum, as per the circular issued by MCA and SEBI from time to time. The requested quorum being present, I call this meeting to order. Before we start the formal proceeding of the EGM, I would request my colleagues at the video conferencing to introduce themselves, starting with Mr. Subodh Gupta, the Independent Director. Good morning, everyone.
I am Subodh Gupta, Independent Director. I am attending this EGM from Panchkula. I am the Chairman of the Audit Committee and Risk Management Committee of the company. Rajinder Gupta ji. Good morning, everyone. I am Rajinder Gupta, Independent Director of the company. I am attending this meeting from Sector 38, Chandigarh. I am the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Stakeholder Relationship Committee of the company. Madam Nirja. Good morning, everyone. I'm Nirja Chetle, Independent Women Director of the company, attending this meeting from Australia, Melbourne. Thank you. Good. Mr. Himanshu Jain. Himanshu Jain. You're on mute. Haan ji. Yeah, good morning, everyone. I am Himanshu Jain, Managing Director of the company. I am attending this meeting from Head Office, Panchkula, ISLL. Sahil Munjal. Morning, everyone. I'm Sahil Munjal, Managing Director for Exports, and I'm attending this meeting from GPU Deravasi. Rishabh Mehta. Good morning, everyone. I am Rishabh Mehta, Whole-Time Director of the company. I am attending this EGM from GPU Deravasi. Gagan, CFO. Good morning, everyone. I am Gagan Agarwal, Chief Financial Officer of the company. I am attending this meeting from Gurgaon, Cyber City. Good. We are also joined by representatives from our statutory auditors, internal auditors, as well as Mr. Vishal Arora, our secretarial auditor and scrutinizer for this meeting. The purpose of the convening this extraordinary general meeting is to seek your approval for the proposed preferential issue of equity shares. The board believes that this is a significant strategic step that will enable the company to accelerate its next phase of growth while further strengthening its financial positioning. At our last annual general meeting, I shared the remarkable transformation that Ind-Swift has undergone over the last few years. Following the restructuring of our business and a successful merger, the company today stands on a much stronger financial and operational foundation with a clear focus on the formulation business and long-term value creation. We closed the financial year ended 31st March 2026 with a gross turnover of rupees 683 crores and net profit of approximately rupees 43 crore. The results for the first quarter are scheduled to be declared on the 10th of August 2026. I have already declared in the last annual general meeting that we are targeting a turnover of rupees 1,000 crore by 27-28 with a EBITDA of 150 crore plus. And I'm very confident that we shall be able to achieve the target very comfortably. The encouraging response from our customers, continued export growth, and increasing opportunities in CDMO have increased an environment where we believe the time is right to invest in our future. Coming to the agenda of the today's meeting, the extraordinary general meeting has been called to discuss the agenda as per the notice already circulated to the members and is taken as read. The main item on agenda is fundraising through preferential issue. I would like to inform that the fund proposed in this meeting are basically promoters to be raised through the preferential issue will primarily be utilized towards setting up of an external warehouse which would facilitate creation of additional space in the existing manufacturing facility at Global Business Unit, Jaipur, Punjab. Expansion of at Jammu facility, which will be intend to make it a EU GMP facility. Investment in research and development, technology upgradation, investment in subsidiaries, and for working capital and general corporate purposes. These investments are expected to enhance manufacturing capacity, improve operational efficiency, strength
strengthen regulatory compliances, and expand our global presence. The proposed preferential issue reflects the confidence of the investor who happen to be the promoters in the company's long-term prospects. The board has ensured full compliance with the Companies Act, SEBI, ICDR regulation, and all applicable laws. Capital is an investment in our future. Every rupee raised will be deployed to create sustainable long-term value for the stakeholders. I sincerely thank our employees, customers, business partners, leaders, regulators, and shareholders for their continued trust and support. I request all the shareholders to support the proposed resolution so that the company can execute its expansion plans and strengthen its position as a leading global pharmaceutical company. Thank you. And I now request Pradeep Verma to proceed with the agenda item of the meetings. Thank you very much, sir. I now proceed with the agenda item. As per the notice and the corrigendum to the same has already been circulated to the shareholders, so it is being taken as read. As the meeting is being convened through VC today, the resolutions have already been put to vote through remote voting, and the requirement to propose and second a resolution is not applicable. I will now brief you about the resolution that has been proposed for approval of the shareholders in the notice of the extraordinary general meeting. Item number 1 is issuance of up to 70 lakh fully convertible warrants to an entity belonging to the promoter and promoter group on preferential basis. Item number 2 is reappointment of Shri Rajinder Kumar Gupta as an independent director for a second term of 5 years in terms of Section 149 of the Companies Act 2013. Item number 3 is to consider and approve alteration of article of association by substitution of article number 76. These are the 3 items which have been proposed in the notice of extraordinary general meeting for the approval of the shareholders. I will now call out the names of the people who have registered themselves as a speaker. We have 12 registered speakers with us. They will be unmuted and will be allowed to ask questions one by one. Members who have not registered themselves as a speaker but still want to ask any question may do so by posing questions in the chat box available on their screen. We will respond to all the queries by the speakers and the queries received in the chat box in one go. In the interest of time, I request all the speakers to please keep the questions in brief. I now request the admin to please unmute Mr. Surinder Kumar Arora if he has joined. Not available. Okay, next is Mr. Gagan Kumar. Not available. Next is Mr. Manjeet Singh. Not available. Okay. Davinder Kaur. Not available. Okay. Mr. Pramod Kumar Jain. नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर नमस्कार, मैं प्रमोद जैन दिल्ली से, चेयरमैन सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्टर डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद करता हूं। इस ईजीएम में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज के प्रस्तावित सभी रेजोल्यूशन का सर मैं समर्थन करता हूं। सर मैं जानना चाहता हूं आज ईजीएम का मुख्य एजेंडा या उद्देश्य क्या है और जो ये फंड का उपयोग 137 करोड़ का कंपनी कहां करेगी, कृपया ये बताने की कृपा करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मुझे लगता है मैं आपको बता चुका हूं, फिर एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि हम एक्सटर्नल वेयर हाउस एक सेटअप कर रहे हैं ताकि जो प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है फॉर वेयर हाउसिंग, दैट कैन बी टेकन इट आउट and we utilize that space for manufacturing, expanding the manufacturing facility within the existing plant. Another is expansion of Jammu facility. Jammu facility जो आज domestic को cater कर रही है, उसको हम EU GMP में convert कर रहे हैं। थोड़ा expansion भी कर रहे हैं उसमें ointment section में। उसके बाद continuous research and development में investment है, technology upgradation है, with the investment in subsidies है, and for working capital general corporate purposes के भी कुछ पैसा लगेगा इसमें।
ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमें एनहांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में भी करेंगी, इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी करेगी और रेगुलेटरी कंप्लायंस और एक्सपैंड ओवर ग्लोबल प्रेजेंस हो जाएगी। हाँ जी, जैन साहब कहाँ गए? प्रमोद कुमार जी। I think we have replied. I move to the next speaker, Mr. Ankur Chanda. Hello, I am audible. Yes. Yeah. Okay. Good morning to everyone. Yeah. सर मैं थोड़ा सा ना अपने सेक्रेटरियल टीम वर्मा जी से थोड़ा सा वो हूँ कि थोड़ा सा कांटेक्ट में नहीं रहते। हम कोशिश करते हैं तो सर करते नहीं है और वो भी कोशिश नहीं करते, तो थोड़ा सा वो कांटेक्ट में रहें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जो पिछले हमारे प्रॉफिट थे उससे हमारे 20% के आसपास इस बार प्रॉफिट रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। बाकी तो ठीक ही है सर, धन्यवाद। ये आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था सर कि पिछली बार जो हमारे प्रॉफिट्स आए थे वो लगभग 250 करोड़ के आसपास आए थे, इस बार 40-42 करोड़ है, तो इतना डिफरेंस क्यों आ गया? नहीं, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में जो हमने मर्जर किया था तो उसकी वजह से एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट आ गया था, क्योंकि एक एपीआई यूनिट सेल करके इसमें मर्ज किया था। तो अदरवाइज वो ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं था इतना 250 करोड़ का। ऑपरेशन प्रॉफिट तो अब से शुरू हुआ है ना ये, अब आगे आगे देखिए। चलिए सर, होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है आगे और अच्छा होगा। बिल्कुल होगा ही अच्छा, बिल्कुल अच्छा होगा। Thank you. I move to next speaker, Mr. Praveen Kumar. I am audible, sir. Yes, बिल्कुल audible है। A very, very good morning to my honorable, respected chairperson, respected board of director, my fellow shareholder, myself, Praveen Kumar, and I'm joining this meeting from New Delhi. Few observation which I love to share with the entire house, sir. I'm with the company for years now, and in this financial year, this is our first interaction with the management. So I wish the entire management team, each and every dedicated employee of our company. Now, after merger, we are becoming really big. Thank you very much for your proactive approach, sir. And today's agenda, first I welcome Rajendra Gupta ji. उनका जो experience है, which will be a great asset to our company. Second, जो preference issue है, which you explained 2 times. So thank you very much. We are deployed every rupee into the company, and that will be bring out lots of revenue and growth and profitability in the future, sir. God bless you with all the health and happiness to you, along with the professional team, sir. I am very, very satisfied as far as my investment in the company is concerned. And today's agenda, I assent both the resolution with flying colors, sir. And one more thing which I love to address here on this platform, sir. Any listed company, the litmus test of any listed company is decided by the communication between the company and the retail investors, sir. In this regard, I love to thank our respected company secretary and his entire team for bringing out higher standard of corporate governance. Mark my words, sir. Even during the course of year, what I experienced myself, if I have any update about the company, that will be I have to send my queries and update to the dedicated mail, which is for the retail investor, and I got the prompt reply. That truly boosts my morale as far as my investment in the company is concerned. It was always a red carpet welcome with our queries and update. Our respected CS is the biggest asset as far as the communication, maintaining higher standard of corporate governance. Thank you very much for this opportunity. Wish you all the luck and all the best with this agenda. Jai Hind, sir. Jai Hind. Thank you for your support. Thank you, Praveen ji. Next speaker is Mr. Sarvjit Singh. Not available. Mr. Rishabh Jain. Not available. Then is Mr. Onkar Gujalwar. Not available. And next is Redepa Gundluru.
Not available. The last one is Mr. Chetan Chadha. Can you hear me, sir? Yes, Hello. yes, we can hear. Yes. Yes, Thank you, yes. sir. Thank you for giving me the chance and opportunity in this EGM for VC mode. सबसे पहले तो ये हमारा सेकंड फेज, मतलब मेरा आपसे सेकंड इंटरेक्शन नहीं है। जैसे कि सभी से पहले वाले स्पीकर शेयर होल्डर ने बताया कि उनका फर्स्ट है, मेरा भी फर्स्ट ही है फेस मीटिंग इस साल का। और जहाँ तक कि हैवी हैवी इन्वेस्टमेंट सबने कर रखी है शेयर होल्डरों ने, ऐसी दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मर्जर होने के बाद से अभी थोड़ा शेयर के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन जो अभी अभी मर्जर हुआ है उससे ऑटोमेटिकली वॉलेटाइल वॉल्यूम है अभी हमारे शेयर के अंदर। और अभी हम प्रेफरेंशियल जो इशू करने जा रहे हैं, जो इस मीटिंग का मेन एजेंडा है, जिसके ऊपर किसी भी शेयर होल्डर ने कोई अपनी वार्तालाप या क्वेरी नहीं रखी है, और उसका भी हमने जो नोटिस दिया है उसका भी कोरगरेंडम इशू किया है। उस कोरगरेंडम में उसकी बाइफरगेशन का फंड यूटिलाइजेशन के बारे में आपने ये लिखा है पॉइंट नंबर 1, लेकिन वो पॉइंट नंबर 1 क्या है ये कहीं मेंशन नहीं किया है। इसको समझने के लिए या तो हमें हार्ड कॉपी ऑफ नोटिस चाहिए थी, जिसकी हमने रिक्वेस्ट लगाई थी, लेकिन हमारे सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अभी तक हमें नहीं प्रोवाइड कराई है। और अब मीटिंग के बाद अगर दे भी देंगे तो हम आपसे उस बारे में बात नहीं कर पाएंगे, तो हमें ईमेल करनी होगी आप लोगों से। और आपने 2 एडिशनल पॉइंट भी ऐड किए हैं जिसको अंडरटेकिंग हेड में लिया है, उसको अपने पॉइंट नंबर 13 दिया है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 13 क्या है वो भी नहीं पता चल पा रहा। तो ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल सा रहता है कि जब अमेंडमेंट की जाती है तो उसके जो क्लॉज होते हैं वो उस नोटिस के नीचे बाइफरगेट करके लिखे जाएं। अगर तो जो स्मॉल इन्वेस्टर है, आप हमें समझ है कि आप सीएस हैं और जो सीएमडी हैं वो भी उस पोजीशन पे हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी की सारी बातचीत समझ पाते हैं, लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो छोटा इन्वेस्टर है, वो उस सारी वार्तालाप को समझ पाए, इसके लिए इतना कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। तो वो आम आदमी की समझ में बात आ जाए कि आप उस फंड से क्या क्या करेंगे, अगर ये डिटेल में दिखा जाए नोटिस के अंदर तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि फंड्स को इकट्ठा करना आसान नेचर है, कंपनी पहले भी ऐसा करती रही है कि फंड्स रेज कर लेती है। जैसे कि इंडस्विफ्ट लिमिटेड को हमने इंडस्विफ्ट लैब में मिलाने की जरूरत इसलिए पड़ी हमारे को क्योंकि वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी, और इस कंपनी की भी हालत धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ ही चल रही थी, और दोनों को मिला के अब हमने एक कर लिया है। तो उससे जो भी प्रॉफिट हुआ वो शेयर होल्डर को हुआ, कंपनी की मैनेजमेंट को उससे कोई फायदा नहीं लगा। और आने वाले समय में भी जब आप फंड रेज करेंगे तो उससे सारा बेनिफिट शेयर होल्डर को मिलेगा, मैनेजमेंट का उसमें कोई रोल और कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि शेयर होल्डर को एवरी ईयर एप्रिसिएशन मिलती रही है और मिलती रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। और डिविडेंड तो आपको हम हर बार कहते हैं, और एजीएम को जो है आप लास्ट डेटों में करेंगे ताकि शेयर होल्डर इजी वे में उसे ज्वाइन ना कर सके। हम गवर्नमेंट अगर 180 दिन का नॉर्म देती है तो हम कोशिश करते हैं कि लास्ट ऑफ द वीक सितंबर में ही चले जाएं, ताकि उसे फ्री टाइमली हमने शेयर होल्डर को फेस आउट ना करना हो। इसी के साथ धन्यवाद कि आपने हमें हमारी बात रखने का मौका दिया, और इन एजेंडाज में जो जो आप चीजें लेके आ रहे हैं यदि उसे प्रिस्क्राइब करके अपने नोटिस में आप बताएं तो सभी शेयर होल्डर को समझ पाएंगे कि आप करने क्या वाले हैं। जो भी फंड रेज करेंगे उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है या उसे हमें अपनी सेविंग में फिर से बढ़ाना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द चांस टू स्पीक विद यू। माई सेल्फ चेतन चड्डा एंड आई एम जॉइनिंग दिस ईजीएम फ्रॉम न्यू दिल्ली। आपके मॉडरेटर ने कैमरे का लिंक नहीं दिया था तो मैं कैमरे से नहीं एक्सेस कर पाया, आपको देख पा रहा था, लेकिन अभी इस स्पीकर मोड में आप लोगों को भी देख पाना मुश्किल हो गया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद चेतन जी। चलो आपको अभी प्रदीप जी बताएंगे जो भी टेक्निकल आपने सवाल उठाया है, लेकिन मैं फिर अभी आप सुन पा रहे हैं ना हमें? अभी सुन पा रहे हैं ना चड्डा जी? अभी अनम्यूट कर दिया है सर, अभी अभी अनम्यूट करा है मुझे दोबारा से। हाँ, अब सुन पा रहे हैं ना? हाँ अब सुन पा रहा हूँ।
टेक्निकल पॉइंटों के लिए प्रदीप आपसे इन टच हो जाएगा, अभी हो जाएगा। लेकिन जो इसके रीजन है, एक तो पहली बात है जितना भी प्रोफेंशियल हो रहा है ये सारा प्रमोटर खुद भर रहा है अपनी कंपनी के प्रमोटिंग कंपनी के थ्रू, इसमें बाहर से कोई नहीं आ रहा, हम अपना ही स्टेक बढ़ा रहे हैं। उसके अगेंस्ट में आप इक्विटी ले लेंगे ना? हम बिल्कुल अपना स्टेक ही बढ़ा रहे हैं ना। बिल्कुल इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है विल डू बेटर। राइट सर, लेकिन किस प्राइस पे बढ़ा रहे हैं इसका कुछ बताया नहीं आपने। नहीं, ये प्राइस अभी बता दिया हुआ है, प्राइस प्राइस मेंशन्ड है उसमें। कोरगोरेंडम में नहीं है सर। मैं आपको जो आपने मुझे मेल भेजी हुई है वो आपको दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा, अपनी ईमेल आईडी कंपनी की दोबारा से भेज दूंगा आपको, बात नहीं हो तो। चलो ये आपने बाइफरकेशन कहीं नहीं दी हुई है। प्रदीप जी कहीं कितने हैं उसे 180 पे है, कहते हैं 190 पे 196 पे कर रहे हैं आप। ठीक है सर, ठीक है। और अभी मार्केट प्राइस से कम में ले चेतन जी, मैं कर दूं, रिप्लाई दूंगा? हाँ कर दो हाँ कोई नहीं सर, आप भी कर दीजिए सर, चेयरमैन सर मैं कर रहा हूँ। चेतन जी, थैंक्स फॉर योर क्वेरीज। आपने जो पॉइंट रेज करा ना, सब जो भी उसमें दिया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नोटिस में और कोरिजेंडम में, दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सचेंजेस ख्याल रखती हैं कि शेयर होल्डर्स को सब इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाए। हमने ऑब्जेक्ट्स दिए, एक्सचेंज ने उसमें ऑब्जेक्शन लगाया कि डिटेल नहीं दी हुई, इसमें और डिटेल दो। तो हमने नेक्स्ट कोरिजेंडम निकाला जिसमें ऑब्जेक्ट्स को और डिटेल में दिया कि पैसा यूज कहाँ पे होगा। ठीक है, उसका अब ये पैसा अभी आना है, अभी फ्यूचर अगले 18 महीने में आना है। तो हमने ब्रॉडली बताया है कि 4 हेड्स के अंदर ये पैसा यूज होगा, जिसमें मेजर इज फॉर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, जिसमें वेयर हाउस लगना है। मुंजासा ने अपनी स्पीच में भी बताया कि एक्सपेंशन के लिए यूज होगा, वेयर हाउस लगेगा, जम्मू फैसिलिटी, R&D। और ये फिर सबसे बड़ी बात है आप लोगों का ख्याल, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है कि पैसा यूज प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए भी एक्सचेंज और सेबी ने मॉनिटरिंग एजेंसी की प्रोविजन रखी हुई है। एक मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट होगी जो कि हर क्वार्टर इसकी यूटिलाइजेशन देखेगी और रिपोर्ट करेगी, बोर्ड को रिपोर्ट करेगी, बोर्ड उसके ऊपर कमेंट देके एक्सचेंज को देंगे, विच इज पब्लिक। आप हर क्वार्टर देख सकते हो कि पैसा कहाँ यूज हो रहा है, कहीं पे कोई डेविएशन तो नहीं है। तो मतलब कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नोटिस आप दोबारा देखोगे, प्राइस भी दिया हुआ है, कितने शेयर्स देने हैं, कहाँ यूटिलाइज होना है। और जो 2 अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सचेंज। थोड़ा टेक्निकल है, तो एक्सचेंज की सेटिस्फेक्शन के लिए ये सारा हुआ है। आपका जो था एक्सपेंशन वाला वो डिटेल में दोबारा दे दिया हुआ। बाकी एक बात आपको बता दूं, हमें ईमेल कर। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी मार्केट प्राइस 230 रुपए के आसपास चल रहा है ना, और आप 196 में बोर्ड को दे रहे हैं 196 में, ये डिस्काउंटेड प्राइस ऑलरेडी है। और जब इसको नहीं डिस्काउंटेड नहीं है इसमें। एक सेकेंड चेतन जी, ये लास्ट क्वेरी है और इसमें एज पर सेबी क्राइटेरिया है, सेबी का प्राइसिंग नॉर्म्स है, उसके हिसाब से जिस दिन बोर्ड मीटिंग कॉल की जाती है जिसमें ये इशू डिसाइड किया जाता है, वहां से एज पर सेबी फॉर्मूला ये कैलकुलेट होती है। तो उस वक्त यही निकल रहा था, और ये एक्सचेंजेस बड़ा क्लियरली मॉनिटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी प्राइस पे कर सकते हैं, डिस्काउंट तो बिल्कुल भी नहीं दे हमें सकते। सर मालूम है, हमें सब मालूम है सर कि 6 महीने का इवैल्यूएशन होती है, मगर मैं बता रहा हूँ ये मैनेजमेंट को ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है ना। तो जब सर मैंने जवाब दे दिया आपको अलॉटमेंट, इंद्रजीत जी। आई थिंक आप बाकी की क्वेरीज मेरे ईमेल आईडी है, इन्वेस्टर एंड की भी है, मेरी भी है अवेलेबल। So we will reply to those queries. I think we are through with the queries of the shareholders, and I now request the honorable chairman to kindly close the proceedings of the meeting. Okay. I would like to express my heartfelt gratitude to all the shareholders of the company for taking out valuable time and participating in the EGM. Thank you very much. Pradeep. Thank you, sir. Thank you, sir. Before I announce the closure of the meeting, I would like to remind the members who have not voted on the resolutions through the remote or e-voting facility to cast their votes on the CDSL e-voting system. The detailed process of voting is mentioned in the EGM notice. The e-voting will be disabled after 15 minutes from the time of closure of this meeting. I now formally propose a vote of thanks to the chairman, sir, and I hereby declare the proceedings as closed. I thank you all once again for being with us for this morning and attending this EGM. Thank you all. Thank you all board members. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Can we conclude, sir? Pradeep, sir? Yeah. Thank you, sir. Akash, please conclude the meeting. Yes, sir. Thank you.